सो परमजीत सर के ऑल इन वन कोर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि ये ऑल इन वन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी स्किल्स एक ही टीचर के द्वारा आपको सिखाई जाने वाली हैं। तो आपने क्योंकि 1000 रुपये का पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल किया है, तो ये पहली वीडियो रहने वाली है। इसमें अबाउट माई सेल्फ मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम परमजीत सिंह निमेश है और बेसिकली मैं मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को देख रहे हैं, वो जानने वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार देख रहे हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ और पैशन से मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो इस पहली लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पहला टाइटल रहने वाला है वो रहने वाला है अबाउट माई सेल्फ। इस अबाउट माई सेल्फ का मतलब ये है कि जब भी हम जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या इंट्रोडक्शन उससे लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में होता क्या है? इंट्रोडक्शन में हम एक दूसरे के बारे में जान पहचान बढ़ाते हैं। ये जान पहचान बढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो हम उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को, उसकी लाइफ को जो है अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। अगर कोई भी कैसा भी सजेशन या डिसीजन वो हमसे मांगेगा तो हम सही से नहीं दे पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं और कई सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। जैसा कि टेलीकॉलिंग के माध्यम से मेरी टीम में काम करने वाले लोगों को आपको बताया था कि सर काफ़ी लंबे अरसे से ऑफलाइन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपना जो है एक प्ले स्टोर पे ऐप, जो कि लर्नोस्फीयर के नाम से, आप जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाके लर्नोस्फीयर सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और रजिस्टर्ड करके उसमें जो है कोर्स बाई कर सकते हैं। तो सर ने सोचा क्यों ना लंबे अरसे से पढ़ा रहे थे, एक छोटे स्तर पर पढ़ा रहे थे, ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी उनकी एजुकेशन। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बड़े स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि ये समय डिजिटल इंडिया का है, डिजिटल भारत का है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। तो उन्होंने भी टेक्नोलॉजी की हेल्प ली और अपना जो है स्टार्टअप निमेश ब्रदर्स कंपनी यानी NBCom के नाम से स्टार्ट किया। और उसके साथ ही उनका एप्लीकेशन लर्नोस्फीयर के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि एंड्रॉयड वर्जन में भी है और एप्पल वर्जन में भी अवेलेबल है। इसके साथ ही उनकी वेबसाइट www.buyyourcourse.com, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं की तो आप विजिट कर सकते हैं। जो कंटेंट, जो चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाली, वही चीज़ें वेबसाइट पर भी हूबहू देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही हाल ही में सर ने नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका URL www.nbcom.in है, उसको भी आप जो है विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं परमजीत सिंह निमेश आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो आई एम ए टीचर। सो परमजीत सिंह निमेश इज अ renowned business leader and the managing director of Nimesh Brothers and Company, an Indian firm that has made significant strides in the education and technology sectors. Under his visionary leadership, the company has established itself as a trusted name in the industry and delivering innovative solutions that caters to the evolving needs of students and educators and institutions. यानी हम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म लर्नोस्फीयर के नाम से। बैकग्राउंड की बात करें तो ऑल्दो परमजीत सिंह निमेश पर्सनल बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ आर नॉट पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड, हिज प्रोफेशनल जर्नी एंड अचीवमेंट्स आर टेस्टामेंट टू द डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड पैशन फॉर एक्सीलेंस. As the managing director of Nimesh Brothers and Company, he has been instrumental in shaping the company's strategic vision, driving growth and fostering cultural of innovations.
यानी कि परमजीत जी जो हैं अपने फील्ड के एक मास्टर हैं जो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर मैं अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस की बात करूँ तो देयर आर सेवरल ऑफ द अचीवमेंट्स they have achieved in their life, and also they have contributed many of the times for the education industry. They are working since 2018 and till now. So if I am talking seriously about them's personal contributions, so Paramjit Singh Nimesh contributions to the education and technology sectors are multi-faced and far-reaching. Some of his notable achievements include especially spearheading the development of cutting-edge educational solutions that integrate technology, pedagogy, and innovations, building strategic partnerships and leading educational institutions, organizations, and industry players, fostering a cultural innovation and entrepreneurship and creativity within the company, driving business growth, expansions, and diversification while maintaining a strong focus on quality, consumer satisfaction, and social responsibility. If I am talking about leadership style and philosophy, then Paramjit Singh Nimesh is known for his transformative leadership style, which emphasizes collaborations, empowerment, and continuous learning. He believes in creating an ecosystem that encourages creativity, innovations, and experimentations while maintaining a strong focus on delivering value of customers and stakeholders. Under the leadership, under his leadership, Nimesh Brothers and Company has become a hub for innovation, education, entrepreneurship, and social impact. His commitment to excellence, integrity, and social responsibility has inspired a new generation of leaders, entrepreneurs, and change makers. Especially if I am talking about plus points which are related to the life of Paramjit Singh Nimesh. First is strategic thinker. Paramjit Singh Nimesh is a strategic thinker who has successfully navigated the company through various challenges and opportunities. And second one is the innovation problem solver. Yes, absolutely, he is known for his innovative approach, the problem solving, which has enabled the company to develop cutting edge solutions. Third, collaborative leaders. Yes, absolutely, Paramjit Singh Nimesh is a collaborative leader who fosters a culture of teamwork, empowerment, and open communication. And fourth is customer centric. Yes, he is deeply committed to delivering exceptional customer experiences and has implemented various initiatives to ensure customer satisfaction. And fifth, visionary. Yes, Paramjit Singh Nimesh has a clear vision for the company's future and has developed a roadmap to achieve its goal. And six, inspiring mentor. Absolutely, he is an inspiring mentor who has guided and mentored numerous professionals, helping them to develop their skills and achieve their potential. And seventh is respected industry expert. Absolutely, under his leadership the company has received various awards and recognition for its innovative solution and committed to excellence. Absolutely. And if I am talking about eighth point, which is related to award and recognition. Under his leadership, the company has received various award and recognition in their entire life for its innovative solutions and commitment to excellence. Especially if I am talking about ninth point, which is related to community engagement. So, Paramjit Singh Nimesh is committed to giving back to the community and has implemented various initiatives to support the education, and not only education but also education system, and not only education system but also entire education world, and beside it healthcare and social welfare department. Oh, ठीक है sir. Beside it, there are several of the features which are related to the life of his role model. So he is a role model for several of the student in their entire life. Especially if I am talking about their role model feature, then he is a role model for young entrepreneurs, and not only for young entrepreneurs but all over the student which are related to their entire life, which are related to their personal and professional life. Like there are the several of the cases in their personal past life. So when we are discussing they are working for the students,
in the past vision. So he is a role model for young entrepreneurs and professionals, inspiring them to pursue their passions and make a positive impact in their communities. And especially now, currently, I am talking about conclusion of the story. So Mr. Singh are working a lot of the things in their entire life to fulfill the dreams of the student, and not only dreams of the student but also the education system of the government of India. So beside it, I am talking about the serious points which are related to the conclusion point of the story of the Paramjit Singh Nimesh life. So Paramjit Singh Nimesh is a visionary leader. It means is that ki visionary, that kind of a person who is looking the future before the time are coming in their life. So that kind of the people are calling visionary peoples and visionary leaders in their life. So after that, if I am talking about who has made a significant impact in the education and technology sector, yes, absolutely. There are multiple types of the example who are working in the field of education, and not only working in the field of education, here working in the field of technology. They are giving a lot of the things and a lot of the services in their entire life. So which are saying me in after some time. So especially after that, his leadership, expertise and passion for innovation have enabled Nimesh Brothers and Company, which are shortly called by the short name of NBCom, to establish itself as a pioneering force in the industry. As the company continues to grow, expand and innovate, Paramjit Singh Nimesh's legacy as a transformative leader and a champion of innovation will continue to inspire and motivate future generations. So especially the conclusion of the story is that ki I have an idea for the better world of the education industry, and not only the better world of the education industry but also the making the changes in the entire life of the student, which are related to the student who are touched, who are connected with me and my life. I will definitely help them, and my vision is that ki I have to comes the dreams who are looking in day or night, the student who are related to my life. So thank you so much. Thank you.